Hello aspirant, myself Jyoti Sharma. Today I am discuss the PGT Commerce paper which is held in 12 May 2024. The first question is, which institutions regulate the money market in India? So option first is correct, Reserve Bank of India. Question number second, the time period of treasury bill in India in general ranges from. The option B is correct, 91 days to 1 year. The term repo rate, question number 3, the term repo rate refers to the rate at which commercial banks borrow money from RBI. Option B is correct here. Now question 4, the term Sensex is associated with which stock exchange in India? तो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट इन इंडिया? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, कमर्शियल पेपर. Which regulatory body is responsible for supervising credit rating agencies in India? तो SEBI. Option C is correct, Security and Exchange Board of India. Now question number 7, what does the term FII stands for? तो foreign institutional investors. Option B is correct here. What does the term call money refers to? Option C is correct here, short term loans between banks and financial institutions. Now question number 9, what does the term SBLO stands for? तो है collateralized borrowings and lending obligations. Question 10, certificate of deposit in money market instruments issued by banks. Question C is correct here. What is primary functions of NSDL in Indian financial system? Option A is correct here, regulate the stock markets. NSDL was established in which year? 1996. Question number 13, the RBI of India issues monetary policy statement biannually. Option C is correct here. Question number 14, in which year was Reserve Bank of India established? 1935. Option A is correct here. Question number 15, which of the following is not a function of RBI? RBI का कौन सा फंक्शन नहीं है? तो बी, regulating stock markets. It's not a function of RBI. Question number 16, who was the first governor of RBI of India? तो Osborne Smith. आफ्टर इंडिपेंडेंस तो CD देशमुख थे, बट बिफोर इंडिपेंडेंस ऑसबर्न स्मिथ है. क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CRR इन बैंकिंग टर्मिनोलॉजी? ठीक है, बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में CRR का है कैश रिजर्व रेशो. क्वेश्चन नंबर है 18,
which of the following is not a type of mutual fund in India? So balance fund is not a type. Option C is correct here. Question 19. Entry load and exit load are associated with mutual fund expenses. Option D is correct. In question number 20, what is an index fund? A fund that aims to replicate the performance of a specific market index. Option B is correct here. Question number 21, identify the right people in rival companies, offering them better terms and luring them away is popularly called as poaching. Option C is correct here. A professor with the view to play in safe might give a class grade near the equal to B regardless of the differences in individual performances. This is an example of dash wise in performance appraisal. तो आई थिंक इसका आंसर सेंट्रल टेंडेंसी होगा. क्वेश्चन नंबर 23. What are 3 situational criteria identified in the Fielder model of leadership? तो leader, members relations, task structures and position powers. Option C is correct here. Now turn to next page. Question number 24. Job analysis, job description, जॉब स्पेसिफिकेशन एंड जॉब क्लासिफिकेशंस, इसको हमने मैच करना है लिस्ट वी के साथ. तो जॉब एनालिसिस क्या होता है? जॉब एनालिसिस होता है कि हमने जॉब को एनालिसिस करना है कि जॉब में हमें क्या क्या करना पड़ेगा. ठीक है, क्या क्या हमारे उसमें वो होगी, क्या क्या हमारे फैक्ट्स होंगे, जॉब फैक्ट्स क्या होंगे. तो इसमें है ऑप्शन ए इसका करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 25. ब्लाइंड एरिया इन द जोहरी विंडो मॉडल रिप्रेजेंट्स. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. unknown to self but known to others. Question number 6. What is the other name of the vertical job loading? Job enrichment. Option C is correct here. Question number 27. According to Kurt Lewin, ये एक ऑथर हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज इन चेंज प्रोसेस. तो रिस्ट्रेन इज अ करेक्ट ऑप्शन हियर. ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 28 हैगा, इफ अ रिलेशनशिप is important to you and you just want to hide your dissatisfactions, you may choose this conflicts management style. तो ये क्वेश्चन थोड़ा
इसमें मे भी हो सकता है, बाकी आंसर की आने पे बताएंगे इसका। वैसे इसका हो सकता है कि कंप्रोमाइजिंग। अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 हैगा what is the penalty for non compliance with the CSR मतलब corporate social responsibility spending requirement by a company। तो both fine and imprisonment यानी कि इसमें आपको जुर्माना भी हो सकता है और कारवास भी हो सकता है, यानी कि सज़ा भी हो सकती है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30 हैगा विच सेक्शन ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 डिटेल विद द अपॉइंटमेंट ऑफ अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स और मैनेजिंग डायरेक्टर्स एंड देयर रोल इन इंश्योरिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो सेक्शन 2003 इज़ करेक्ट हेयर। ऑप्शन बी। Which section of the Company Act 2013 mandates the establishment of an independent directors committee and what is its primary purpose? तो सेक्शन 149 सबसेक्शन 2 रिस्क मैनेजमेंट। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट हेयर। According to Section 50CA of the Indian Tax Act 1961, how is the fair market value of unquoted shares determined for the purpose of computing capital gain on their transfer? तो इस क्वेश्चन का आंसर हम आंसर की आने के बाद बताएंगे। वैसे ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट लग रहा है हमें। एवरेज मार्केट प्राइस ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। क्वेश्चन नंबर 33 अंडर सेक्शन 43 CA of the Income Tax Act 1961, when does the deemed stamp duty value apply for computing income arising from the transfer of immovable property? तो इसका आंसर है हमारा ये आंसर भी हम आपको उसके बाद ही बताएंगे, आंसर की आने के बाद ही। ऑप्शन 34 हाउ डज द compositions scheme in GST benefits small businesses and what are the eligibility criteria for opting into this scheme? तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट हेयर। इट प्रोवाइड्स a flat rate tax structures and it is applicable to business with a turnover up to 1.5 crores. Question number 35 examine the role of goods and services tax appellates tribunal, इसकी शॉर्ट फॉर्म है GSTAT in the resolution of disputes related to GST, highlights its powers and functions, ensuring fair and impartial decisions. तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हेयर। GSTAT is the final appellate authority for GST disputes, ensuring speedy resolutions. Question number 36 if an individual taxpayer has undisclosed
Foreign assets and incomes. Which section of the Income Tax Act 1961 deal with the taxations and penalty for such undisclosed assets? So option C is correct here, section 271 triple A. आ गया. इन विच क्वेश्चन नंबर 37. In the context of international taxation, what is the equalization levy introduced in the Income Tax Act 1961 primarily aimed at taxing? तो digital transaction. Option B is correct here. Mr. Jones minor son जैकॉब, ये हम आपको बताएंगे आंसर की आने के बाद. क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर. क्वेश्चन 39 आल्सो. क्वेश्चन नंबर 40. Which of the following is not a property of the normal distribution? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एज यू नो कि इसमें मीन मीडियन मॉड क्या होने चाहिए, आपके इक्वल होने चाहिए ना. तो इसकी प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है, तो ये है कर्टेसिस इक्वल टू 3, दैट इज़ मेसोकार्टिक इज़ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. दिस इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी. अब है क्वेश्चन नंबर 41. Calculate Carl Pearson's coefficient of correlation based on the given data for a series of pair data. तो ऑप्शन 1 is correct here, minus 0.3741. ऑप्शन A is correct. Which of the following statement is correct with the relation to simple regression? तो सिंपल रिग्रेशन ये क्वेश्चन भी हम आपको बाद में बताएंगे. वैसे इसका हो सकता है ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट. अब है क्वेश्चन नंबर 43. टाइप 2 एरर्स इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग. तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट है. इट इज़ यूजली डिनोटेड बाय बीटा एंड occurs when the null hypothesis is false but not rejected. Question number 44. ये मैंने अभी सॉल्व नहीं किया है, ये बाद में करती हूँ.